I request Mr. Akhilesh Rathi, President IMA and MD Savit Universal Limited, to escort on stage Dr. Himanshu Rai, Chairman of IMA Board and Director of IIM Indore, Mr. Shreegopal Kabra, MD and Group President of RR Global, Mr. Sanjay Jain, MD of TT Limited, and Mr. Sanjay Agrawal, Director and CEO of AU Small Finance Bank. May I request all the dignitaries on the stage to do the honors of lamp lighting ceremony. And may I also request Mr. Satish Chandra Gupta, DGM of State Bank of India, to also join for the lamp lighting ceremony. Thank you. May I now request Mr. Sanjeev Khanna from Patanjali Foods Limited and Ms. Shonali Paul, board member of IMA, to do the honors of giving floral welcome and presenting mementos to Dr. Himanshu Roy. Take me. Now I request Ms. Sushma Nandi from Business Automations and Mr. Santosh Muchal, CA and past president of IMA, to do the honors of welcoming and giving memento to Mr. Shreegopal Kabra ji. I now request Mr. Prateek Maheshwari and Mr. Vijay Goyal to do the honors of welcome and presenting mementos to Mr. Sanjay Jain. पैक ही देना. May I now request Mr. Anil Joshi from Vishal Fab and Mr. Girish Mangla from Mangla Engineering to do the honors of welcoming Mr. Sanjay Agrawal and presenting the memento.
Thank you, sir. Now I request Dr. Himanshu Rai, Chairman of Board of Governors of IMA, to declare this conclave open. Very good morning to you, ladies and gentlemen. I declare the 30th IMA International Management Conclave open. Thank you, sir. And with this, we present to you the countdown and curtain raiser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now I invite Mr. Akhilesh, IMA President. Thank you. Now I invite Mr. Akhilesh Rathi, President of IMA, to give the welcome address. When we have all the speakers, if you have any questions, you can send us the slips. Good morning. Good morning. Thank you. That's the energy needed at IMA. There is a saying at IMA that there are 20, 30 presidents working all the time. And I am just by name and designation named as president. But what you see today, the entire energy is all the IMA committee members, the board members, and whom we call very dearly as Team IMA. So I am welcoming you all on behalf of the Team IMA, a very warm and hearty welcome to all of you.
Warm welcome to our honorable speakers, respected delegates, and dear students. Welcome to the 30th International Management Conclave hosted by the Indore Management Association. In these 2 days, we'll have exciting time with 23 speakers spread over 15 sessions, speaking on the theme of reinvent, evolve, and lead. Speaking is not just the lectures, there are fireside chats, there are panel discussions, and there are, for young people, for startups, there are side sessions which will benefit them. IMA, you will be delighted to know, was formed in 1963, and this is the 30th International Management Conclave hosted at Indore. I am also happy to share that IMA has been adjudged as the best management association in the country 15 times. Further glad to share that last 3 years we have continuously won the award. Welcome our guest of honors in the inaugural session, Shri Sanjay Agarwal, Managing Director and CEO, AU Small Bank. Of course, the name is Small Bank, but he is a big bank now. So welcome, sir. Shreegopal ji Kabra, who is the Managing Director and President of the RR Cable Group. Shri Sanjay Jain, Managing Director of TT Limited, a very famous author and an industry leader. And of course, our own Dr. Himanshu Rai, the Director of IIM Indore. You know, as a child, we have grown seeing one blue tin dabba. The tin dabba contained coconut oil. And as a child till now, the only thing that has changed in our coconut oil, that it has become from a tin dabba, a tin box, to a nice blue bottle of different shapes. The credit of this transformation and building the largest brand of coconut oil in the country goes to none other than Mr. Harsh Mariwala, who is the chairman of Marico Limited. We welcome him. He is our awardee for the Lifetime Achievement Award for the last year, 2021. Another brand which has made important inroads in our life is Fevicol. We all, if you think of an adhesive, Fevicol, Fevikwik, Fevistick, M-Seal, and nowadays Dr. Fixit as waterproofing chemical. The person behind the grand success of this organization, which has made Mr. Madhukar Parekh the 16th richest Indian on the Forbes list, chairman of Pidilite, is our Lifetime Achievement Awardee for the year 2022. We heartily welcome Mr. Madhukar Parekh as well. Those who are patronizing IMA for last many decades must be surprised over this change, because we have been hosting all our programs in the Abhay Prashal, which was a sports arena, wherein there are 3,000 students in the galleries and about 1,000 people from the corporates on the floor. There has been a continuous demand to accommodate more corporates, more industries, more professionals, more business entrepreneurs. Therefore, with increased capacity of 50%, we have shifted it to Brilliant Convention Center. So welcome all the delegates, all the new companies, all the new businesses who are supporting IMA. In fact, this year also, there are 21 student chapters from 21 colleges. More than 2,000 students are there online. So welcome all the students. Even today here, we have more than 300 students in this hall. Welcome all my young friends. There is a welcome to all the 23 speakers. I have mentioned about our awardees and the gentlemen on the dais. But I also welcome Mr. Anand Sen, Managing Director of Tata International Limited, Mr. Sunil Rohokale, Managing Director of ASK Investments, Dr. Satya Gupta, Founder and CEO of VLSI Society, Mr. MP Vijay Kumar, who is the CFO of SIFI, Lieutenant General Dr. Rajesh Pant, Cyber Security Expert in the Prime Minister's Office, Mr. Anubrata Viswas,
who is the Managing Director of Airtel Payment Bank, Ms. Richa Anirudh, author and media personality, Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Ms. Meenakshi Lekhi, and in the end today, we'll hear the words of wisdom from none other than Swami Gyan Vatsalji from BAPS, Ahmedabad. That will end the day 1. On day 2, again, it's a power-packed session. I will request you all to make the best of it. We have Ms. Usha Barwale, who is the Managing Director of Maheko Seeds, Padam Shri Savji Bhai Dholakia, Hare Krishna Exports, the Diamond King of the country. Then we have the most coveted, most respected spiritual leader, Mahatriya Ra, the head of Infinitum, Mr. Gunjan Shah, MD of Bata Limited, Mr. Nilesh Shah, Managing Director of Kotak Mutual Fund, Mr. Bala, sorry, and of course our motivational leader, Mr. Simarjeet Singh, who has been a champion motivational life coach. Welcome, welcome all of you. Thank you very much for coming to Indore on our invite and blessing with your words of wisdom to IMA. Thank you very much. Friends, India has been land of entrepreneurs, and the business acumen comes naturally to Indian people. Our next speaker is an icon for traditional Indian wisdom. Before I invite Shreegopal ji Kabra to speak, may I request for his AV introduction, please. Shreegopal Kabra, a business leader, philanthropist, a global entrepreneur, often recognized as a trendsetter in the industry, is the managing director of RR Global. He is credited to being the first to introduce the wires and cables industry to low-smoke zero halogen cables with Unilay core technology. Mr. Kabra serves as the chairman of the International Copper Association, executive council member of SAARC Chamber of Commerce, associating at the highest capacity with IEEMA as its past president. Over the years, Mr. Kabra's success has been highlighted by a number of awards, recognitions, and felicitations by various bodies and groups from across the world. Shreegopal is also an active promoter of environmental conservation, health, and education. We are delighted to welcome Brand Ambassador of Electrical Fire Safety, Mr. Shreegopal Kabra. Kabra ji. मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर बैठे भाइयों तथा बहनों, इंदौर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। शायद मेरे परिचय में भूल गए कि मेरे पिताजी इंदौर में 1963 में नेपाल से हम लोग यहाँ पर आए, तो उनके व्यापार की शुरुआत यानी लक्ष्मी जी की शुरुआत हुई और मेरी शिक्षा की शुरुआत इंदौर से हुई। यानी माँ सरस्वती की कृपा जो भी है और जो मैं आज आपके सामने बोलने जा रहा हूँ वो इंदौर की देन है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम, आज मैं भी इंदौर से कोई रिश्ता रखता हूँ, आज मेरी बेटी जवाई भी यहाँ रहते हैं, तो क्यों नहीं अपनों से अपनों की बात की जाए। तो मैं से एक हम की जर्नी, जीवन एक यात्रा ऐसा मानना है, और मैं से हम उसमें सारी बातें आपको आ जाएगी कि सस्टेनेबिलिटी कैसी होगी, सक्सेसफुल कैसे होगा, रिस्पेक्टेबल कैसा होगा। क्योंकि समस्या जीवन में सिर्फ मैं की है, तो उस मैं से कैसे हम बाहर निकलें, अगर ये समझ लें तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी काम ऐसा है जिसमें हम सफल नहीं हो सके। एक जर्नी हमारी खुद की, थोड़ा बहुत एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ कि उससे किसी को प्रेरणा मिले और फ़ायदा होता है, इसलिए जनरली ये प्रयास रहता है कि किसी मंच पर जाकर हम हमारे खुद की बात ना करें, हमारे खुद के प्रोडक्ट की बात नहीं करें,
एक इस प्रकार के संस्कार से मैं आया हूँ, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देने के लिए शायद अगर आवश्यकता पड़ी तो शायद मैं ज़रूर करूँगा। किसी भी चीज़ की शुरुआत की जो 4 चीज़ों में होना चाहिए कि आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप प्रोफेशन में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेबल, साइजेबल एंड वैल्यूएबल और सस्टेनेबल। जो अभी नई भाषा चल रही है सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी के हिसाब से बात भी चल रही है, बिजनेस के हिसाब से बात चल रही है। लेकिन इन चारों में जो सबसे आसान है, जो हम सब कोई भी कर सकता है, कि जिस दिन में हमारा जो भी व्यापार शुरू किया हमने या शुरू करते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन करती है, तो रिस्पेक्टेबल हो, अगर ये भावना शुरू हो जाती है तो आप ये समझिए कि आपके एक बिजनेस की फाउंडेशन की शुरुआत अच्छी हुई। क्यों कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, जब तक हमको जो भी करना है वो ग्रेसफुली करना है, ये नहीं आएगा तो कोई भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती, आपकी सोच नहीं बदलती है। अरे एक सोच जीवन में क्या क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग भी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की है। वी आर द स्मॉल ट्रेडर, इंडस्ट्रियल आइटम में काम करते थे। तो जब 81 में अरे हर 5-10 साल में एक चेंज हम करते गए, हमारे ऐसे होते गया। तो शुरू के कुछ समय तक मैं थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तुरंत जैसे आप थोड़े बड़े होते, थोड़ा मैं होना भी चाहिए, लेकिन शुरू के थोड़े पीरियड में, ताकि आपके अंदर एक जुनून आता है। तो मैं महाराष्ट्र की टूर पे गया फर्स्ट टाइम, तो गूगल नहीं था तो मैप लेके चला और एक 9 दिन की यात्रा करके आया। सिर्फ ट्रेलर थे हम लोग के पास, एक अच्छी कंपनी की डीलरशिप थी और कुछ माल बेचते थे। लेकिन पूरे 9 दिन की यात्रा में लगभग मैं 60 डीलर को मिला। पता करना पड़ता था किसी वाइंडर को पूछ के कि भैया कोई वाइंडिंग वायर बेचता है क्या, इंडस्ट्रियल आइटम थी, पता करके हम मिलते थे। लेकिन वो पूरी यात्रा में किसी का भी ऑर्डर नहीं लिया। एक बिजनेसमैन होने के नाते या सेल्स के लिए जा रहा हूँ, ऑर्डर नहीं लिया। गया, ये हमारा कार्ड है, हम लोग ये प्रोडक्ट रखते हैं, आप लोग जब भी मुंबई आइए मिलिए। तो दैट चेंज द होल लाइफ ऑफ आवर फैमिली, आवर कंपनी एंड थॉट प्रोसेस। उसके पीछे की सोच ये थी कि मैं जा रहा हूँ, वो माल मांगेगा, मेरे से भाव की बात करेगी, मेरे को कोई भाव की बात करता अच्छा नहीं लगता है। वो उधार मांगेगा, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उसको उधार दूँ कैसे दूँ। तो सवाल ये था कि शुरू से मैं एक ट्रेडिंग कंपनी में, मेरे को रिस्क भी नहीं लेनी थी, उधार भी नहीं देना था, उससे भाव भी नहीं करना था और अपनी एक इमेज बनानी थी। तो एक ही तीर में ये चारों शिकार हो गए। और जैसे मैं वापस आया, उसके बाद जो लोगों का झुंड व्यापारी आने लगे और एक व्यापार की जो हम एक ऊंचाई पे पहुँचे। तो जिस कंपनी की हमारे पास डीलरशिप थी वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी, और उसी एक साल में उस कंपनी का हम लोग 35% माल एक के लिए बेचते थे। खाली एक छोटी सी सोच बदली की कि ऐसे जाऊंगा, मिलूंगा, लेकिन ऑर्डर नहीं लूँगा। उसके बाद चूँकि हम लोग यहाँ से बम्बई गए 66 में, तो पिताजी ने शुरू से हमको, माय फादर इज़ वेरी ग्रेट विजनरी, तो उन्होंने हमको बम्बई जाते ही गुजराती पेपर और मराठी पेपर चालू किया। तब मैं 7 साल का था वहाँ पे। तो ये उनको कहा था कि हमको बम्बई में रहना है, तो बच्चों तुम समझो कि तुमको गुजराती और मराठी आने की बहुत आवश्यकता है। शुरुआत हमारी वहाँ से उन्होंने की। और हमको, हम जो घाटकों पर रहते थे, वहाँ से लार्सन टुब्रो की फैक्ट्री, अभी तो सब मॉल बन गए, थिएटर बन गए, पहले कुछ नहीं होता था। जो गार्डन या लेक उसी पे ले जाया करते थे, ना उतने पैसे होते थे ना इतनी सुविधा होती थी, दोनों बात थी। तो लार्सन एंड टुब्रो की फैक्ट्री के बाहर वो हमको गाड़ी खड़ी कर देते थे। ये सोच आई कहाँ से? जो उन्होंने, पिताजी ने हमारे, उनको, हमको तीनों भाई को लार्सन टुब्रो की फैक्ट्री और बसें दिखाते थे। फैक्ट्री में जाने तो मिलता नहीं था, लेकिन वो बसें दिखाते थे। दिमाग में सेट था कि एक दिन तुमको जीवन में ऐसा काम करना है कि तुम्हारी कंपनी में भी इतनी बसें हो और इस प्रकार की कंपनी हो। तो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि आज माँ पिताजी के आशीर्वाद है, हमने भी जब हमारी फैक्ट्री थोड़ी बड़ी हुई तो वही येलो कलर की लार्सन टुब्रो की जो बसें हैं, वही की वही येलो कलर की बसें हमने की, ताकि हमको एक फील प्राउड होता है। 86 में एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 3000 फुट की जगह, 3 टन महीने का कॉपर कंजम्पशन। हमारी एप्लीकेशन लोन की 6 लाख रुपए की रिजेक्ट हो गई। ये इतिहास में पहली बार कुछ कॉन्टैक्ट निकला। यानी 1986 में जिस कंपनी को या जिस फैमिली को 6 लाख रुपए का लोन नहीं मिला, आज हम बिना कोई गलत काम किए हुए आज 12,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं।
तो उस 3 टन कॉपर से आज हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर फैब्रिकेटर हैं। आर काबिल इस और 50% बिजनेस, 50% बिजनेस हमारे दूसरे भी हैं, यहाँ भी है, ग्लोबली भी है। तो फिर 99 में हमने एक आर काबिल की स्थापना की, जहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी पूरी की पूरी, एक कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन तब तक एक लेवल तक कंपनी और ग्रुप पहुंच चुका था। केमिकल बिजनेस हम लोग एक्सपोर्ट में करते थे। 91 में केमिकल बिजनेस चालू किया। केमिकल का सी आज भी नहीं आता, लेकिन बढ़िया काम करते हैं। तो 99 में जब आर काबिल की स्थापना की तो मन में एक सोच बहुत अलग थी। पहले बनाया, जब प्रोजेक्ट किया तब ठीक है, वी विल सेल द प्रोडक्ट। जब मशीनें आई सारी की सारी, तो सारी मशीनें हमारी जर्मनी से और यूरोप से आई थी कंपनी। तो हमने आर केबल के बदले, जनरली इंडिया में आप सब जानते हैं कि वायर एंड केबल को केबल बोलते हैं, और हम पहली कंपनी थी जिसको काबिल किया। तो नाम से भी क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी नाम भी काम कर जाता है, कभी खुद भी काम कर जाते हैं। तो हमने केबल के बदले काबिल किया, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण था पहले से तय था कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए आर काबिल करेंगे। दूसरा, हमारा कोई इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, हम तो इंडस्ट्रियल आइटम वाले, तो कैसे लोग करेंगे। तो उस नाम के कारण से जब हम लोगों के पास जाते थे तो लोगों के अंदर एक पूछते थे, ये काबिल है क्या। और मेरा ये मानना है कि किसी मीटिंग में अगर सामने वाला कोई सवाल कर लेता है तो आप ये समझिए कि 50% आपकी जीत होगी, आपको बोलने का मौका मिला। नहीं तो एक नए प्रोडक्ट के साथ अगर कहीं जाते हैं तो अगर आपको आपके बोलने का मौका नहीं मिलता तो विजिट भी कोई काम की नहीं होती। तो एक ये नाम से एक चेंज। दूसरा, हमने तय किया कि हम 5वें साल प्रॉफिट कमाएंगे। पहले 5 साल लगातार इतनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि हमको इसको ब्रांड क्रिएट करना है, मार्केटिंग करना है। तो वास्तव में किसी मेरे दोस्त ने सिखाया था कि जापानीज जब आते हैं इंडिया में और कंपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो साथ में 10 साल के लॉस का भी अपने प्रोजेक्ट में कॉस्ट में गिन लेते हैं। तो थोड़ा बहुत माइंड में एक आइडिया है, चलो क्यों ना हम किया जाए। तो हमने वाकई में पहले साल 27 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद पहले महीने का सेल 8 लाख रुपया। तीसरे महीने हमारी टीम 100 लोगों की मार्केटिंग की टीम, क्या होगा मालूम नहीं है, पर विज़न था कि ये करना है, इसको मार्केटिंग करना, अच्छी चीज़ बनानी है, ग्लोबली जाना है। 100 आदमी की टीम, बड़ी मुश्किल से 12वें महीने में हमारी 1.25 करोड़ रुपये की सेल हुई। मेरे भाई साहब प्रोडक्शन देखते थे तो बोलता, गोपाल तो क्या करता समझा, इन आदमी लोग को पगार कैसे देंगे। हमारा चिंता मत करो, अपना भविष्य बहुत उज्ज्वल है, अपना तय हो गया है कि हम 5वें साल कमाएंगे। आप मेहरबानी करके 5 साल तक पेशेंस रखिए, 5वें साल नहीं होगा तो आप बोलेंगे वैसे मैं करूँगा। लेकिन सबने मिलकर पेशेंस रखा। 2003 का पन्ना एक विज़न हमने बनाया था। देखिए विज़न क्या होता है कि जनरली द बिगेस्ट मिस्टेक, चाहे CEO यहाँ बैठे हैं या एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, एक अधिक से अधिक फोकस टॉप लाइन बॉटम लाइन पे होता है। और मेरा हमेशा उल्टा है कि टॉप लाइन बॉटम लाइन नहीं, उसके अलावा कई सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप करते हैं तो आपका टॉप लाइन का फिगर भी और बॉटम लाइन का फिगर सस्टेनेबल होता है। अभी लॉकडाउन में जो बहुत दिन से काम नहीं था, तो पन्ना मिल गया। 2003 में एक विज़न लिखा था। उस समय इंडिया से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना या वायर एंड केबल एक्सपोर्ट करना वाज नॉट इजी। न तो इंडिया की ब्रांड इमेज थी उस टाइम, न कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में रिस्क लेता था। लेकिन हमने 2002 से इसमें मेहनत की और मुझे बताते हुए आज खुशी होती है कि वी आर द ओनली इलेक्ट्रिकल कंपनी इन इंडिया विच गॉट ए प्रेजेंस इन 90 कंट्री। 90 कंट्री में हमारा माल आपको देखने मिलेगा। वी आर द लार्जेस्ट केबल एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फिगर के अलावा सारे विजन हम सेट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप आएगा। क्योंकि जो अचीव करना है वो बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके तरीके सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं उसका बताता हूँ। वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच गॉट 33 इंटरनेशनल अप्रूवल फॉर सिंगल फैक्ट्री। वी आर 100% रीच कंप्लायंस। वी मेक अवर वायर एंड केबल फ्रॉम ग्रीन एनर्जी पावर। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज आवश्यकता है। पुराने के तरीके से काम करने का तरीका गया। अब हमको, जिस तरह हिमांशु जी ने बताया कि सब तरीके सारे के सारे चेंज होने वाले हैं।
मैनेजमेंट की थ्योरी भी हर 5-10 साल में चेंज होगी, इसलिए जिस तरीके से हमने शुरू किया उसी तरह से चलेंगे, वैसे होने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें, इसलिए आज हम लोग ने इसका आज जैसे आज अखिलेश जी अपने एग्जाम्पल में दे रहे थे पैराशूट ऑयल, हर्ष मारीवाला जी हमारे फैमिली के गुरु हैं, हम लोग को समय समय पे मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। आज फेविकोल, वो प्रोडक्ट क्या ध्यान में नहीं आता, पर सीधा मुंह से फेविकोल निकलता है। उसी तरह हमने सस्टेनेबिलिटी के आधार पे इंडिया का रिटेल का बड़ी से बड़ी कंपनी से अधिक ज़्यादा हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है। 2,70,000 इलेक्ट्रिशियन हमारे साथ हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में है। ये सस्टेनेबिलिटी कहाँ से बता रहा हूँ मैं, कैसे सस्टेनेबिलिटी आएगी। देखिए, ये चाहे पैराशूट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, चाहे फेविकोल है, चाहे वायर एंड केबल है, ये आपके हाथ में है कि आप कमोडिटी को प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या प्रोडक्ट को कमोडिटी बनाना चाहते हैं। ये तीनों के तीनों, चाहे हमारा वायर एंड केबल हो, चाहे आपका कोकोनट ऑयल हो, चाहे फेविकोल हो, है बेसिकली तीनों के तीनों कमोडिटी प्रोडक्ट। लेकिन तीनों के तीनों कमोडिटी को हमने एक प्रोडक्ट बना के, एक ब्रांड बना के, एक सस्टेनेबिलिटी ला के, एक रिस्पेक्टफुल चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि प्राइस इज परसेप्शन। ये जो बिना काम के प्रेशर में रहते हैं ना कि यार कॉस्ट प्लस बेच देते हैं, कितने दिन आप बेच पाएंगे, आपका सस्टेनेबिलिटी आ नहीं सकती है। वी आर हियर टू क्रिएट ए ब्रांड। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, और सारा का सारा ये मैं से हम कन्वर्ट भी हो जाएंगे धीरे धीरे करके, तुरंत समय की सीमा के अंदर अंदर। तो सबसे कम आयु जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं हमारी है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि हमको किसी को तकलीफ होने वाली है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। उससे हमारे से अधिक लाइफ हमारी कंपनी की है। प्रोडक्ट की इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, हो सकता है प्रोडक्ट एक्सप्लोर हो जाए, लेकिन कंपनी नहीं होती। लेकिन कंपनी से अधिक अगर किसकी आयु है तो ब्रांड की है। और अभी जो नया समय आ रहा है वो ब्रांड से भी ऊपर एक ट्रस्टेड ब्रांड हो जाएगा। तो खाली ये जो ब्रांड तक की जर्नी भी आगे चल के काम नहीं आएगी, अब तक शायद चल गई, लेकिन आपको आपके ब्रांड को इतना ट्रस्टेड करना पड़ेगा। ट्रस्टेड के साथ में आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत सारी कंपनी इंडिया में, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपने सिर्फ ब्रांड को यूज़ कर रही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा रही है, क्योंकि ये क्वार्टरली प्रॉफिट का चक्कर के प्रेशर में वो जो MNC जो बिग 4 कंसल्टेंट है, ये किसी न किसी कारण से अपनी फीस के लिए लोगों को, कंपनियों को गुमराह भी कर रहे हैं। हमारी कंपनी में भी है, हमारी कंपनी में सारे बिग 4 काम कर रहे हैं, बताता हूँ आपको मैं। पर बिग 4 जिस तरह एक सेशन में दिया भी है चाइना +1 स्ट्रेटेजी, तो मेरा निवेदन IMA से कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी का नाम चेंज करके देयर इज़ नो चॉइस अदर देन इंडिया ये होना चाहिए। चाइना, हम किसी की भीख में नहीं जीना चाहते कि चाइना से हट के हमारे पास आओ। हमारी शक्ति है, जिसको आना है हमारे पास आना चाहिए। अभी परसों ही हमारे कोई यूरोप से कस्टमर आया था, पहली बार विजिट किया उन्होंने, हमसे चालू किया काम। तो हमने उसको हमारी स्टोरी बताई कि वी वांटेड टू बिकम ए ग्लोबल कंपनी। तो बोलते हैं वेरी सिंपल, to become a global company, what you do, you have to be too good, and you are too good. That's why you are a global company. तो किसी भी चीज़ को करने के लिए या बनने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, आपको स्वयं को बहुत अच्छा होना है। इसलिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि वी शुड नॉट ट्राई टू क्रिएट अ फॉलोअर। आपके बिलीवर होने चाहिए। फॉलोअर तो मजबूरी में, अगर कॉलेज का प्रिंसिपल यहाँ बैठा है तो सामने स्टूडेंट बेचारे फॉलो रहेंगे, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं है। लेकिन बिलीवर कैसे बनते हैं? बिलीवर वो बनते हैं जब आपको वो कुछ करते हुए देखते हैं। बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको रियल जीवन में कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना, तो ही आपके बिलीवर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हमको करना है, ये देखना चाहिए कि हम ऐसा काम करें कि लोग उसको देख के उस पर विश्वास करें, न कि हम उसको बोले विश्वास करें। नहीं, देखिए बताता हूँ मैं आपको, नहीं मेन पावर की कमी है, नहीं ट्रेंड कमी है। पेपर में ज़रूर हम पढ़ते हैं या चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, आजकल लोग नहीं मिलते, लोग अच्छे नहीं मिलते, लोग टिकते नहीं हैं। ये सब कैसी गलत भावना में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। वैसे भी विश्व को एक आंकड़ा है, हिमांशु जी शायद कंफर्म कर देंगे, कि दुनिया में 5% मालिक है या ट्रस्टी, और 95% लोग काम करते हैं। उसके बावजूद भी ये पूरा विश्व इतना बढ़िया चल रहा है। तो प्रॉब्लम वो 95% में है या प्रॉब्लम हम 5% में ही सोचने की ज़रूरत है।
आज हमारे यहाँ भी 7,000 लोग काम करते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई सीनियर छोड़ के नहीं जाता कंपनी में, क्योंकि हमने उनके लिए एक रिस्पेक्ट खड़ा किया है। जो हमारी थीम है, फॉर आवर कस्टमर वी शुड बी रिलायबल रिसोर्सेज। कस्टमर को फील होना चाहिए कि आपके पास अगर आता हूँ तो मेरे को एकदम रिलायबल रिसोर्सेज मिलेगा। और जो टीम है, चाहे आपके सप्लायर है, चाहे आपके वर्कर है, चाहे आपके कस्टमर है, चाहे जो लास्ट माइल इलेक्ट्रिशियन तक है, उसको लगना चाहिए कि मेरा उसके साथ में एक रिस्पेक्टेबल रिलेशंस है। तो हमने जो जब तक ये वास्तविकता में आप कहेंगे, मेरे को लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आज के जो माहौल बना हुआ इंडिया का, वो जो ब्रांड इंडिया है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है, शायद हम लोग समझ नहीं रहे। क्योंकि पूरा विश्व आज भारत के साथ काम करना चाहता है। अभी परसों ही देखिए, जो 500 प्लेन का ऑर्डर दिया टाटा ने, एयर इंडिया ने, उसका फ़ायदा एक साथ में 3 देश हमारे साथ करीब हो गए। आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने एक अच्छा मैसेज भी दिया, नहीं तो आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बोइंग से प्लेन लिया उसका मैसेज होता नहीं है, पर दिया। रोल्स रॉयस यूके से इंजन लिए उन्होंने, यूके के साथ हमारा क्लोजनेस है। फ्रांस से एयरबस से प्लेन लिया। ये एक डील से 3 देश हमारे करीब आए। इसको हम चाणक्य राजनीति भी कह सकते हैं, चाणक्य इकोनॉमिक मूव भी कह सकते हैं। तो जो सारे एक से एक स्टेप जो चल रहे हैं, आज जो G20 में जो भारत को प्रेसिडेंसी मिली है, क्या हम इसका महत्व समझ रहे हैं? आपको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में और मैं काफ़ी फॉरेन घूमने का शौक़ भी है, तो लेकिन पूरी दुनिया आज भारत को देख रही है। हम लेकिन तैयार नहीं है। सरकार का काम एक माहौल बनाना। देखिए, सरकार से किसी प्रकार का सपोर्ट, आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हम सोचते हैं कि सरकार हमको कुछ मदद करेगी तो हम शायद गलतफहमी में जीते हैं। और टाइम आ गया कि हम अपने पैर पे खुद खड़े रहें और खुद बने। कब तक पगडंडी के सारे हम चलेंगे? तो इतना एक अच्छा माहौल बना हुआ है। पूरी दुनिया जहाँ देखो वहाँ पे इंडिया की चर्चा चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी चल रही है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो शायद एक दिन हम लोग फर्स्ट भी हो जाएंगे। वाई शुड नॉट बी ड्रीम? सोचने में या करने में, अगर हम सोचेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज आपके पास इंदौर एक अच्छा शहर है, IMA का एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि एक विश्व के मैप में इंदौर को हम ले जाएं। आज आपका प्रवासी भारतीय यहाँ प्रोग्राम होने के बाद में वैसे भी इस पूरी दुनिया में पेपर में इंदौर का नाम आ गया, तो क्यों नहीं सब मिलकर इंदौर को एक विश्व के मैप पे ले जाएं। तो ये अक्सर ये मैं से हम की जर्नी जो है, मी टू वी, जो मेरा कहना मानना है कि हमेशा मी यानी मनी अर्निंग, वी यानी वेल्थ अर्निंग। वो वेल्थ में मनी भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं कि मनी नहीं आती। नहीं तो लोग बोलेंगे यार मनी अर्निंग में तो फ़ायदा क्या। तो मी टू वी में एक जो जर्नी है, या आपके बोल में, आपकी भाषा में, अगर मैं से हम और हम से अगर आप तक चले जाते, पहली यात्रा मैं से हम तक अगर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमसे आप, अरे जैसे पहले 2-3 साल आप करते हैं, मैंने किया ठीक है चलता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी टीम आपके साथ में काम करती है, परिवार के सदस्य नहीं है, नहीं कि हम सगे भाई बहन है वही, लेकिन जो हमारे साथ काम करते हैं वो ही एक परिवार का सदस्य है। तो उन सबको जब मिलकर बात करेंगे कि हमने किया, हम चलो साथ में करते हैं, और हम के बाद एक लेवल पहुँचने के बाद सारा का सारा श्रेय जिस दिन आप आपके टीम को, यानी आपके जो परिवार को देंगे, जो आपका सेल्स का बंदा है, या आपका प्रोडक्शन का बंदा है, या आपके कंसल्टेंसी फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपका जो सबऑर्डिनेट है, आप सारी की सारी क्रेडिट उनको दीजिए। देखिए, एक जैसे पैसा जो है, हमेशा बोलता हूँ कि जो आपने दे दिया वो अपना है, लेकिन जो अपना है वो अपना नहीं है। हम लोग एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि जो आज आपके पास है या मेरे पास है, किसी के पास है, क्या परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। हम एक एकदम गलत फहमी जीते हैं। आज भी चाहे इंदौर हो चाहे बम्बई हो, कितने करोड़पति आए चले गए, कितने नए बन गए। तो एक साइकिल है, एक जीवन, एक यात्रा, इसमें लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है उसके लिए क्यों इतने मोहब्बत करते हैं? इसलिए बोलता हूँ, जो धन है दीजिए, जो प्यार है वो दीजिए। आपके लोगों को जितना आप सम्मान देंगे उतना ही रिवर्स आएगा। वो कहते हैं ना, जो आप दोगे वो आप पाओगे। तो इसलिए देने की प्रथा
में हम जितना विश्वास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये जो मय की बात में एक मेरे दोस्त बहुत अच्छी बात बताते हैं कि ये मय में हम है क्या। तो उनकी जो एक बात रहती है कि ये एक पूरा ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी एक पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कई सागर में कई ग्रह, उस ग्रह में एक पृथ्वी, उस पृथ्वी पे 204 देश, 204 देश में एक भारत देश, उसमें एक राज्य मध्य प्रदेश, उसमें एक शहर इंदौर, इंदौर में कई मोहल्ले, मोहल्ले के अंदर गली और गली के अंदर एक आपका मकान, उस मकान में भी कई लोग। तो पूरी एक श्रृंखला में आप देखिए मैं में उस वो ब्रह्मांड के सामने मैं हूँ क्या, कुछ भी नहीं। फिर भी हम लोग मैंने किया। उसी मय को अगर सामने वाले के मय को मिलाकर अगर हम कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन ये मैं दोनों मिला के हम हो गया तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर भी हमारे साथ में हो जाएगा। और जब ईश्वर हमारे साथ में आ जाएगा तो हमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Kabra ji, for sharing your golden words of wisdom. Friends, you heard the 4 stories of India's growth enablers. We have got so many questions, but we have limited time to give to Q&A. So I'll ask first question to Dr. Himanshu Rai. You have the cordless mic near you. This question comes from Vaishnav Vishwavidyapith. What prompted you to launch the elective course on justice, ethics and morality? Okay, so this is an interesting one. It was such a long time back that I organized this course called Justice, Ethics and Morality, and happens to be a super subscribed course. The reason was threefold, in fact. The first reason was that I realized that many of my students who used to come to me were a little confused about the difference between good and bad and right and wrong. And they said, look, good and bad is something which is told to us by our religion, by our community, by our parents. So is it the same as ethics? And therefore, I wanted to differentiate between morality and ethics. That was one. The second reason was something that had happened in 2008. So, I started teaching leadership from 2006, and the definition of leadership at that point of time that was given in social sciences was that leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in such a way that makes it cohesive and coherent. And I thought, brilliant, all encompassing. And then in 2008, something happened. And what happened? Satyam happened. Ramalingam Raju happened. I mean, here was a company called Satyam, and here was a person called Ramalingam. And then he scanned the country in such a way that 0.4% of our GDP got shaved down in that particular year itself. Of course, the Enrons had happened in 2001, and therefore we were already aware. And thus I said, here's a person who was revered so much. Where did he go wrong? And I realized that the definition of leadership actually lacked the presence of a moral compass. So that was my second reason. And the third reason was, every time I would talk about that definition, I would ask people to name some leaders who matched that definition. And people would name the usual, Mahatma Gandhi, J.R.E. Tata, and so on and so forth. However, the very first time I conducted this exercise, somebody also mentioned Hitler. Somebody also mentioned Osama bin Laden. And then when I looked at the definition, I realized that these two people also matched that definition. So there was nothing wrong with the people who were naming these people. There was something which was missing in the definition itself. And what was missing was the concept of fairness. And thus came to me the idea that instead of talking to people only about passion, look at the villains of the history. Everyone was passionate. What they lacked was compassion. And therefore I thought I have to also talk about compassion, and that can come under justice, ethics and morality. Very right, sir. Passion to compassion. We have next question from Patanjali Foods for Mr. Kabra. And it says that SMEs in India have 2 categories. One is those who evolve and get ready for emerging opportunities. And second is those who always complain to government for support. How can second category be brought to first? It's a mindset. Very simple. Second category, see, for SME in this budget, there's a tremendous support. Government has given that if you don't get payment on time,
To whom supply, he has to pay the tax. Right. So their financial, this is the first time there is a total preference in this government for SME is very high. There is no issue. We also started SME. I have also, right now, we have some couple of business other than Arakavil, which are SME, and we are very happy. See, it's a simple, think differently, think long term, and focus on to create a foundation of your organization. Things will be changed. Very good. We have next question from Mohini Fibers for Mr. Sanjay Jain. That Indian textile industry has been one of the largest employer traditionally. How can we grab global markets and remove unemployment from India? I think so that's the dream of the government also. And I think so textiles and like many other industries is a global industry. And we should not compartmentalize us as a domestic industry, as an international industry. We should not only think global, a lot of us think global, but we don't act, but we act local. But if you want to be an international player, also act global, integrate and benchmark yourselves with the best in the world. Don't look at Indian companies, look at what's happening best in the world and focus and grow towards it. And as Mr. Kabra said, even if you're an MSME, please be focused, plan, dream big, have a vision, and I'm sure you'll capture global markets, because if we don't capture global markets, our industry is really not going to grow more than the Hindu rate of growth. So the real opportunity for Indian textile industry lies in that large global market which China is slowly vacating, and China plus one is now there to stay, and let that plus one be India. Thank you. Thank you, sir. We have another question for Mr. Sanjay Agrawal from CA Alok Jain. That suddenly small finance has become big business. How can it really give a push and momentum to growth in economy and employment? You did repeat the question, sorry. Small finance has become big business now. Yeah. How can it really give a push and momentum to growth in economy and employment? No, I think we got this small because the structure was this, that it was a special vehicle for do a small financing, do priority sector, all those things. But that doesn't mean that we cannot scale up, right? And as I told you that we were around maybe 5 lakh customers in 2017, being an NBFC. But now we are around 3.5 million customers, right? We were around 3,000 people as employee. Now we are 30,000 employees, right? We were around in 10 states. Now we are around 20 states. So I think you have to design your whole business model in a way that it is scalable, right? It has to be scalable. It has to be standardized. Has to be sustainable. So if you do these 3 things, then you can build a franchise. And if you build a franchise, then I think everything comes in play, which is whether you want to build more for your Indian economy or a world economy, or maybe you want to push for employees. I think then is a ripple effect which comes in play, right? So I think small is just a word, in my opinion, but you need to build more and more into it. Let's build more content. Let's build more kind of models which can be scalable. And then you get everything you want, right? So I think as far we are concerned, we know that we are a small finance bank, but we can operate like a big bank also, if our design allows us to do that. Thank you, sir. Mr. Rakesh, I just want to add one thing. This concept that there is unemployment in the country, I think so it's a myth. Anyone who wants to work today in our country will find a job and an opportunity for sure, the way we are growing. Thank you. Sanjay ji, Issue is only of skill and unskill, right? Yeah. Sanjay ji, Yeah. there was one question which was very insistent to ask, although I am exceeding, is why do you recommend writing your own obituary? Sanjay ji. You want to, That means someone has read my book. Yes, someone has read your book. Yeah. I think so, to find your real goals of life. It's the last chapter of my book. The best part is you sit down and feel after 5 years, if you're no more,
and you had to write your own obituary yourself. I think so you'd sit down and pen that down. You'll find your real objective of life, and you'll stop postponing things in life, and you'll get on to doing what you really want to do. Thank you, sir. Because that is the biggest truth of life. Thank you, sir. My dear friends, we had a wonderful session on India's growth enablers. I can say that 75 years back, we had made a tryst with destiny to bring back our past glory. We have seen in this session that India's growth enablers are making this possible and inspiring all of us that in this Amrit Kal, India can reinvent and evolve so that we can lead the world. I can borrow words from my favorite poet, Dushyant, to share feelings of all of you that कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए. Let this fire ignite our growth to lead the world. Now I invite Ms. Preeti Ladda and Mr. Sapan Shah to carry on the proceedings of award ceremony. Thank you everyone. Thank all of you.